and all. We from Nanak Public School New Branch welcome you to our PCX project Learn with Fun. आज हम दुनिया के दो सबसे एक्सप्लोसिव सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स, जहाँ ग्रेविटी से लेकर रिलेटिविटी तक थोड़ा ज्यादा ही हैवी है। केमिस्ट्री, जहाँ सब इतना लेट होता है कि आपका दिमाग भी केमिकल चेंज से गुजर जाए और यह सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही रिएक्टिव है। ये वही मैजिक है जो आपके सोडे को फिर से भर देती है। तो आज हम मिलेंगे उन एटम से जो कभी भी एक दूसरे को मिलने पर तैयार रहते हैं। पर यार, कल मेरा केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट तो पूरा ड्रामा बन गया था। कैसा ड्रामा? तुम्हारे लैब के टेस्ट ट्यूब्स की एक्टिंग कर रहे थे क्या? नहीं यार, कल मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट और विनेगर को मिक्स किया था और लैब में तो वॉल्केनो बन गया। लग रहा था एक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। अरे, तुम्हारा लैब तो ब्लॉकबस्टर मूवी सेट लग रहा है। तुम्हें नेटफ्लिक्स पे शो बनाना चाहिए। हाँ यार, पर केमिस्ट्री के रिएक्शन तो याद ही नहीं रहते और जितना ज्यादा याद करने की कोशिश करे उतना ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस का रिएक्शन बन जाता है। डोंट वरी, इसी प्रॉब्लम को लेके हमने केमिस्ट्री के रिएक्शंस को मजेदार रूप में दर्शाने की कोशिश की। ओह फाइनली, अब मेरे केमिस्ट्री के कुछ डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए केमिस्ट्री के चमत्कारी दुनिया की सैर पे चलें। Caco cakelo gando wando laka laka tam akko takko idigo idipai ciki cakaco gili gili mal sulu sulu mal maka laka huko bukure caka laka bikko cikko sili sili go cakadum ciki cakaco. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ वक्त जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले ऑफ कर दो। Good morning, everyone. Here, K stands for potential of hydrogen, which ranges from 0 to 14. It shows acidic, basic, or neutral conditions of solutions or a liquid. Less than 7 is acidic and more than 7 is basic. And here we have used the natural indicator named as red cabbage extraction, and we have added some acids and bases to it. And the solutions are
change its colors due to the ranges of the acids and bases. Thank you, everyone. Papa, Hare, Gare, Gama Pasa, Bum Bum Bum, Bum 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 Bole, Bum Chicka Bole, Masti में डोले, Bum Bum Bole, Masti में डोले, Bum Bum Bole, Masti में तू डोले. Every organic matter is whole in another organic matter. Here, the rubber and the petrol, both are the organic matter. When the things got so weird that they make your mileage dream look normal, and where the Newton's apple meets the Einstein cause the zero. Here the laws might be written in Greek, but the results are anything but extraordinary. नंदिश, ये न्यूटन की लॉज तो सिर के ऊपर से जाते हैं और ये थर्ड लॉ का क्या सीन है? Hey Bhavani, every action has an equal and opposite reaction. Simple. अच्छा, जैसे मैंने अपने एक दोस्त को धक्का मारा और उसने भी मुझे धक्का मारा, राइट? हाँ, exactly. क्या ये एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मैं एग्जाम के एफर्ट्स डालूं और वो मुझे एक्सेलेरेशंस मिले? हाँ, तुम जितना पढ़ोगी तुम्हें उतने मार्क्स मिलेंगे. फिर कॉपी मत करना. Buckle up because we are about to turn the universe into our very own playground of understanding and hilarity. Nandish, what do you think about the motion chapter? According to the motion chapter is all about speed and velocity, but from starting we had a lot of confusion between the speed and velocity. Yes, that's true because the chapter is really confusing, and through this act we are trying to avoiding that confusion. Thank you. We are going to avoid the confusion which we have in our motion chapter. Here the ball is going up due to the force applied by the ball. And when the ball is in motion, it stays for a rest for a while. And now the ball is coming down due to the gravitational pull of the earth. And when the ball is at rest, its speed is zero, which is initial velocity is zero. And when the force is applied, the initial velocity is to final velocity at 2 meters per second. Acceleration, which is due to rate of change of velocity. The formula A equals to V minus U by C. Minus C, when the ball is going against the gravity. Plus C, when the ball is coming towards the earth due to gravitational pull of the earth. And Newton's third law. Every action has an equal and opposite reaction, which is also known as conservation of momentum.
recoil velocity of the gun, where the mass of joy is less than others. This principle is also used in the rocket launching. And now for the next step, we are going to learn the Newton's first law, law of inertia. Every object in the universe remains at rest unless an external force acts upon it. Here comes the Newton with his laws. It is due to law of inertia, Newton's first law. ये किताबें भी है कितनी रहस्यमय हर एटम हर सेल की कहानी है अद्भुत और गहराइयों से भरी In the puzzle of the universe lies a sea of knowledge. In this quest, each day is a new and extraordinary journey. We have seen that molecules can have as much as drama as your favorite TV shows, with reactions that seems to have a mind of their own. We, from Banana Public School New Branch, thank each one of you for joining our project. Thank you.